नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्रीनलैंड संकट और बढ़ते टैरिफ वॉर के बीच दावोस पर टिकी दुनिया भर की नजरें। थोड़ी देर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। नहीं थम रही रुपए में गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसला। 91 रुपए 74 पैसे प्रति डॉलर तक गया। एफआईआईज की इक्विटी में भारी बिकवाली और डॉलर की जोरदार डिमांड से बना दबाव। बाजार पर दिखा रुपए की गिरावट का असर। तेज गिरावट के बाद बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल शेयरों में रही बिकवाली। सोने चांदी में धुआंधार तेजी का दौर जारी। एमसीएक्स पर सोने का भाव निकला 1,55,000 के पार। चांदी भी और चमकी, भाव 3,35,000 के पार। जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने दिया इस्तीफा। ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर सिंह ढींढसा होंगे जोमैटो के नए सीईओ। 1 फरवरी से संभालेंगे कार्यभार। जोमैटो के बोर्ड ने दीपेंद्र गोयल को वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर नियुक्त करने की सिफारिश की। वाईफाई और दूसरे नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। दूरसंचार विभाग ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को लाइसेंस की शर्तों से किया बाहर। वाईफाई की बढ़ेगी रेंज, टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों को होगा फायदा। आने वाले दिनों में बढ़ सकता है हवाई किराया। सरकार जल्द हटाएगी हवाई किराए पर कैपिंग, लेकिन किराए पर निगरानी रखेगी जारी। एयरलाइंस को हर 15 दिन में देना होगा किराए का डेटा। आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग की खारिज। भारत में ही खेलना होगा T20 वर्ल्ड कप, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप से होगी छुट्टी। आज दुनिया भर के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज सबकी निगाहें टिकी है दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वो संबोधित करेंगे। ग्रीनलैंड संकट और यूएस यूरोप में गहराते टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के संबोधन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ट्रंप किसी भी हालत में ग्रीनलैंड का कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने यूरोपीय देशों और नेटो को धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर उनकी बात नहीं मानने वाले सहयोगी देशों पर टैरिफ थोपने की धमकी दी है। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप के ग्रीनलैंड पॉलिसी और टैरिफ की धमकी का जोरदार विरोध किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ये कहा है कि देशों के रिश्ते एक दूसरे के सम्मान से चलते हैं। धमकी या किसी तरह की बुलिंग करने को मैक्रोन ने गलत बताया। ईरान के मसले पर भी ट्रंप के बयान पर नजर रहेगी। आज दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोलेंगे और पूरी दुनिया की नजर उन पर रहेगी। ऐसे में आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप तिरछी नजर। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बाजार में आज रुपए ने दबाव बनाया। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर तक लुढ़क गया। आरबीआई के दखल के बावजूद रुपए में गिरावट बढ़ी है। क्यों गिर रहा है रुपया, पूरी डिटेल्स बता रही हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश। लार्ज सिंगल डे फॉल है, 0.8% फॉल। ये पिछले बार हुआ था नवंबर 21 को, जब ट्रेड सिग्नेचर होने वाला था और नहीं हुआ। और फिर मई में भी ऐसे सिंगल डे फॉल हमें देखने को मिला 0.8% का। ये कुछ नया कारण नहीं है, बस फॉरेनर्स बेचे जा रहे हैं। आप देख रहे हो 2026 के इनॉग्रेशन से ही हर दिन 4,000-3,000 करोड़ तो बेच ही रहे हैं। वो कुछ $500 मिलियन होता है। अभी लास्ट 24 आवर्स में सारे ही मार्केट्स गिरे हैं, ये ट्रंप और ग्रीनलैंड के रीज़न को देखकर। तो ऑलरेडी वीक एसेट, ऑलरेडी बेरिश एसेट, वीक नहीं कहूँगी, बेरिश एसेट पे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर एक छोटे छोटे कारण तो होते ही है। ये जो हम कहते हैं 1 मंथ अगो स्वॉप्स जो एनडीएफ मार्केट में आरबीआई एंटर करता है, उसके दैट लीव्स अ लॉट ऑफ बैंक्स शॉर्ट ऑन डॉलर्स। वो जब मच्योर होता है
वो बैंक्स खरीदने आते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया था। अगर 1 मंथ अगो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आरबीआई ने एंटर किया तो वो प्रेशर भी आज देखने को मिला। स्टॉक मार्केट तो गिर ही रहा था, तो इसलिए रीजंस तो बहुत हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमें हमेशा ये फॉल को नेगेटिव रूप में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रुपी फॉल इज आल्सो द सॉल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इंडियन कंपनी के अर्निंग्स बढ़ सकते हैं। जब आप एसआरएफ की बात कर रहे हैं, उनको भी फॉरेन कंपटीशन का, चाइनीज केमिकल्स कंपटीशन होता है, और चाइनीज रेनमिनबी के जरिए इंडियन रुपी हैज फॉलन 12% ईयर ऑन ईयर। डॉलर के मुकाबले इट्स ओनली 5.5%। तो ये एक तरफ से राहत है इंडियन कंपनीज के लिए। प्रॉब्लम ये होता है जब सडन शार्प फॉल्स इन अ शॉर्ट टाइम होता है, तब वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स बेचने नहीं आएंगे और अच्छा दाम मिल सकता है। इंपोर्टर्स जल्दी से खरीदने आएंगे कि कहीं उनका हेजेस और महंगे हो जाएंगे, और इन्वेस्टर्स भी आने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको देखना होगा कि और सस्ते में आते ही वो नुकसान देखना नहीं चाहेंगे ना। तो अभी सबका जड़ क्या है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर अर्निंग सीजन अच्छा डबल डिजिट में चला होता तो हमें ये शायद देखने को नहीं मिलता। अभी हमको ग्रोथ के लिए ही प्रे करना चाहिए। ग्रोथ इज द बेस्ट सॉल्यूशन। रुपए की गिरावट का असर बाजार पर भी देखने को मिला। शुरुआत में बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में बाजार सुधर कर बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली हावी रही। आज कैसा रहा बाजार का कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, लगातार तीसरा दिन है मार्केट में गिरावट का। निफ्टी अगर आप देखें तो ज़रूर आपको थोड़ा सा ऑफलोज नज़र आएगा, लेकिन खास बात है कि अभी भी स्टॉक्स पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर रहे हैं। चाहे आप स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें या फिर माइक्रो कैप, यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अभी तक वही कारण निकल कर आ रहे हैं कि दरअसल आप देखें तो अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार से अनसर्टिनिटी चल रही है, मार्केट्स पर इम्पैक्ट आपको साफ नज़र आ रहा है। अब रिजल्ट का इम्पैक्ट बहुत साफ है मार्केट पर। आप देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर इंटरनल्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टॉक में इतनी गिरावट के बावजूद बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। मार्केट को आउट परफॉर्म किया इसने। जेएनके बैंक यहाँ पर भी तेज़ी रही। एसआरएफ, इसके नतीजे कल मार्केट के दौरान आगे थे, लेकिन आज यहाँ पर फॉलोअप एक्शन देखने को मिला। गिरावट यहाँ पर नजर आई। और विक्रम सोलार, स्टॉक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिरते मार्केट्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाई, जैसे एमआरपीएल है, इटर्नल है, केपीआर मिल्स, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स नजर आए। आईटी स्टॉक्स में एकाएक गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे थे टेक महिंद्रा के, लेकिन इसमें तेजी टिक नहीं पाई, गिरावट यहाँ पर आई। परसिस्टेंट सिस्टम है, साइंट, यहाँ पर एक कट देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तो कल्याण ज्वेलर्स है, ये जब मार्केट अच्छा कर रहा था तभी भी परफॉर्म नहीं किया। आज देखें तो एक खबरों के बीच बड़ी गिरावट। डिक्सन टेक लगातार नोज डाइव कर रहा है। यूपीएल में लगातार दूसरा दिन बड़ी गिरावट का, और साथ में पेटीएम, यहाँ पर भी देखें तो दिन के दौरान बड़ा ब्रेकडाउन नजर आया। 2026 अभी तक शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा है। साल की शुरुआत से ही बाजार सिर्फ गिर रहा है। इस साल सिर्फ 13 ट्रेडिंग सत्र निकले हैं, लेकिन निवेशकों की हालत खराब है। अभी तक कैसी रही बाजार की चाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुदर्शन कुमार। सिर्फ अभी 13 ट्रेडिंग डेज में, और ऐसा लग रहा है कि कम से कम आधा साल बीत गया होगा जिस तरीके का मार्केट का फॉल देखने को मिला है लास्ट कुछ एक दिनों में। और अगर जो बात करें इस 13 ट्रेडिंग सेशंस में, हम निफ्टी का जो फॉल है ऑलमोस्ट 4% है, और ये बिग जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ये हम पहली बार इतना बड़ा फॉल देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में, जो कि 2016 के बाद पहली बार है। और कंटिन्यूसली ये थर्ड ईयर है जहां पे हम नेगेटिव स्टार्ट किए हैं, सिर्फ अगर जो 13 सेशंस की बात करें। और फॉल के कारण क्या हुआ, बीएसई लिस्टेड कंपनीज ने अपना मार्केट कैप जो इरेज किया है वो है मोर देन ₹25 लाख करोड़। अब आते हैं फॉल देखते हैं सम ऑफ द मेजर इंडिसेस के। पहला, निफ्टी में 4% की गिरावट देखने को मिला है। सिमिलरली सेंसेक्स में 4.4% का गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया, जहां पे 1.6% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन जो मेजर पेन देखा गया है वो है
है ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप इंडेक्स में 6% का गिरावट देखने को मिला है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 7% का गिरावट देखने को मिला है। तो टॉप मिड कैप लूजर्स क्या हैं? तो अगर जो आप देखेंगे टोटल 50 निफ्टी स्टॉक्स में 33 निफ्टी स्टॉक्स में लास्ट 13 डेज में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। उसमें से 6 स्टॉक्स का जो फॉल का रेंज है वो है 10 to 19%, 17 स्टॉक्स का फॉल का जो रेंज है वो है 4 to 9%। टॉप निफ्टी लूजर्स कौन कौन से हैं? आईटीसी 19% गिरावट देखने को मिला है, ट्रेंड 13%, रिलायंस 12%, जियो फिनांस 10%, अदानी एंटरप्राइजेस 10%। तो 2025 तो खराब था, लगा था कि 2026 अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत खराब ही रहा है। अगर जो आप 2025 और लास्ट 1 ईयर की बात करें, इंडियन मार्केट बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है। और अगर जो डॉलर टर्म में अगर जो रिटर्न्स देखेंगे, इसने रिटर्न दिया है सिर्फ 3%। अगर जो कंपेयर कीजिए दूसरे मार्केट से, S&P 500 12% ऊपर, डैक्स 32%, कैक 17%, निकेई 33%, हैंगसेंग 31%। तो आगे क्या? तो अगले कुछ एक दिनों में एक ही चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्या कमेंट्री मिलता है सिर्फ एक पर्सन से, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। और बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल कोफोर्स के नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं कोफोर्स के नतीजे, बता रहे हैं आशीष वर्मा। जब इस रिजल्ट सीजन का आगाज होने वाला था तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस फिर से कह रही थी कि सबसे अच्छे आईटी में अगर किसी के नंबर्स आने तो कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट के आने। पर्सिस्टेंट ऑलरेडी आ गया, आज सुबह ही हम लोग बातचीत कर रहे थे और वाकई एक्सपेक्टेशन से बेहतर ग्रोथ डिलीवर करी है। जहां तक कोफोर्ज की बात है, लास्ट 2 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस गजब कर रहा है और इस क्वार्टर में भी 3 से 3.25% के आसपास सीक्वेंशियली कांस्टेंट करेंसी में उछाल देखने को मिलेगा। क्यों थोड़ा सा ठंडा हो रहा होगा? क्योंकि सीजनैलिटी, बीएफएसआई इंपॉर्टेंट है इनके लिए और बीएफएसआई में फरलॉज होते हैं इस Q3 में, उसका असर होगा, जिसके चलते आप देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा होगा। मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में 14% के आसपास थे, 14% थे इनफैक्ट अच्छे उछाल के बाद। इस क्वार्टर में 70 से 100 बेसिस पॉइंट, यानी कि तकरीबन 1% तक मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। और मार्जिन्स के कॉन्ट्रैक्शन के पीछे बड़ा रीजन होगा क्योंकि ये कर्मचारी के वेतन बढ़ा रहे हैं, वेज हाइक्स, उसका इंपैक्ट होगा। पर बहुत हद तक क्या है, इनके वो जो ईसॉप खर्च वगैरह थे वो इस बार रिड्यूस्ड होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रुपए में जो कमजोरी आई है तो वेतन में बढ़त का असर उसे थोड़ा काफी हद तक निगेट कर देंगे। इसलिए सिर्फ 70 से 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर रहे होंगे। मुनाफे का आकलन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हो सारी की सारी आईटी कंपनीज लेबर कोड के लिए प्रोवाइड फॉर कर रही हैं, तो कहना मुश्किल होगा, पर इस पे आप बाजार फोकस कर नहीं रहा है। ऑपरेशन And all of the distinguished guests, it's a who's who, I will say that. I've come to this year's World Economic Forum with truly phenomenal news from America. Yesterday marked the 1-year anniversary of my inauguration, and today, after 12 months back in the White House, our economy is booming, growth is exploding, productivity is surging, investment is soaring, incomes are rising. It marked the 1-year anniversary of my inauguration, and today, after 12 months back in the White House, our economy is booming, growth is exploding, productivity is surging, investment is soaring, incomes are rising, inflation has been defeated, our previously open and dangerous border is closed and virtually impenetrable, and the United States is in the midst of the fastest and most dramatic economic turnaround in our country's history. Under the Biden administration, America was plagued by the nightmare of stagflation, meaning low growth and high inflation, a recipe for misery, failure, and decline. But now, after just 1 year of my policies, we are witnessing the exact opposite. Virtually no inflation and extraordinarily high economic growth. Growth like I believe you'll see very shortly our country has never seen before, perhaps no country has ever seen before. Over the past 3 months, core inflation has been just 1.2 all-time high records. So that's in 1 year, 52 records, adding $9 trillion in value to retirement accounts, 401ks, and people's savings. People are doing very well. They're very happy with me.
Since my inauguration, we've lifted more than 1.2 million people off of food stamps, and after 4 years in which Biden secured less than $1 trillion of new investment in our country. Think of that, $1 trillion, substantially less than that. In 4 years, we've secured commitments for a record-breaking $18 trillion, and we think when the final numbers come out, they'll be closer to $20 trillion of investment. That's never been done by any country at any time, not even close. Just over 1 year ago, under the radical left Democrats, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world. In fact, the United States economy is on pace to grow at double the rate that was projected by the IMF just last April. And with my growth and tariff policies, it should be much higher. I really believe we can be much higher than that. And this is all great news, and it's great for all nations. The USA is the economic engine on the planet, and when America booms, the entire world booms. It's been the history. When it goes bad, it goes bad. You all follow us down, and you follow us up, and we're at a point that I don't believe we've ever been. I never thought we could do it this quickly. My biggest surprise is I thought it would take more than a year, maybe like a year and 1 month. But it's happened very quickly. This afternoon, I want to discuss how we have achieved this economic miracle, how we intend to raise living standards for our citizens to levels never seen before, and perhaps how you too and the places where you come from can do much better by following what we're doing, because certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way, it's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. In recent decades, it became conventional wisdom in Washington and European capitals that the only way to grow a modern Western economy was through ever-increasing government spending, unchecked mass migration, and endless foreign imports. The consensus was that so-called dirty jobs and heavy industry should be sent elsewhere, that affordable energy should be replaced by the Green New Scam, and that countries could be propped up by importing new and entirely different populations from faraway lands. This was the path that Sleepy Joe Biden administration and many other Western governments very foolishly followed, turning their backs on everything that makes nations rich and powerful and strong. And there's so much potential in so many nations. The result was record budget and trade deficits and a growing sovereign deficit driven by the largest wave of mass migration in human history. We've never seen anything like it. Quite frankly, many parts of our world are being destroyed before our very eyes, and the leaders don't even understand what's happening. And the ones that do understand aren't doing anything about it. Virtually all of the so-called experts predicted my plans to end this failed model would trigger a global recession and runaway inflation. But we have proven them wrong. It's actually just the opposite. In 1 year, our agenda has produced a transformation like America has not seen in over 100 years. Instead of closing down energy plants, we're opening them up. Instead of building ineffective, money-losing windmills, we're taking them down and not approving any. Instead of empowering bureaucrats, we're firing them, and they're going out and getting jobs in the private sector for 2 and 3 times what they were making in government. So they started off hating me when we fired them, and now they love me. Instead of raising taxes on domestic producers, we're lowering them and raising tariffs on foreign nations to pay for the damage that they've caused. In 12 months, we have removed over 270,000 bureaucrats from the federal payrolls, the largest single-year reduction in government employment since the end of World War II. Nobody thought that was coming, but we had no choice to make a country great.
You can't have all federal jobs. We've cut federal spending by $100 billion and slashed the federal budget deficit by 27% in the single year. It's going to go down quite a bit more from that, driving inflation way down from the record highs of the Biden administration. Every month, they went up and up and up. I promised to cut 10 old regulations for every single new regulation. But instead, I've cut, actually, till this point, 129 regulations for every one new regulation approved. So every time they come in with a new regulation, we do at least 10, but so far it's averaging out to 129, if you can believe it. In July, we passed the largest tax cuts in American history, including no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security for our great seniors. We also provided 100% expensing. That's the one they like. And bonus depreciation for all new equipment and capital investments to help companies expand and shift production to America. They are so in love with that. They build a plant, they're able to deduct it immediately, the whole thing, rather than waiting 38 to 41 years in the old days. This is a miracle taking place. Nobody thought it would ever be done by any country, but it's done by us. It was what made my first term the most successful 4-year term that we've ever had from a financial standpoint. And now we've upped it. This is a 10-year program, not a 1-year program. But you're allowed to deduct everything in 1 year. It used to be 38 to 41 years. With tariffs, we've radically reduced our ballooning trade deficit, which was the largest in world history. We were losing more than $1 trillion every single year, and it was just wasted. It was going to waste. But in 1 year, I slashed our monthly trade deficit by a staggering 77%, and all of this with no inflation, something everyone said could not be done. There were a couple of brilliant people that actually thought I was doing the right thing. I thought I was doing the right thing. Now they all think I'm doing the right thing because they can't believe the numbers. American exports are now up by more than $150 billion. Domestic steel production is up by 300,000 tons a month, and it's doubling over the next 4 months. It's doubling and tripling, and we have steel plants being built all over the country. Nobody thought they'd see that. Factory construction is up by 41%, and that number is really going to skyrocket right now because that's during a process that they're putting in to get their approvals, and we've given very, very quick, fast approvals. In the process, we've made historic trade deals with partners covering 40% of all U.S. trade. Some of the greatest companies and countries in the world. We have countries as our partner, too. The European nations, Japan, South Korea. They're our partners. They've gone into massive deals with us, especially on oil and gas. And these agreements raise growth and cause stock markets to boom, not only in the U.S., but virtually every country that came to make a deal, because, as you've learned, when the United States goes up, you follow. It's really become a staple. In America, I've stopped the nation-wrecking energy policies that drive up prices while sending jobs and factories to the world's worst polluters. They are indeed polluters. Under Sleepy Joe Biden, new domestic oil and gas leases fell by 95%. Think of that. Then they wonder, why was gasoline going up so fast? The gasoline actually topped $5 a gallon, and some places $7 a gallon, and more than 100 major power plants were violently shut down by incompetent people that had no idea what the hell they were doing. Under my leadership, U.S. natural gas production is at an all-time high by far. U.S. oil production is up by 730,000 barrels a day, and last week we picked up 50 million barrels from Venezuela alone. Venezuela has been an amazing place for so many years, but then they went bad with their policies. 20 years ago, it was a great country, and now it's got problems, but we're helping them. And
those 50 million barrels, we're going to be splitting up with them, and they'll be making more money. They've made it a long time. Venezuela is going to do fantastically well. We appreciate all of the cooperation we've been giving. We've been giving great cooperation. Once the attack ended, and they said, let's make a deal. More people should do that. But Venezuela is going to make more money in the next 6 months than they've made in the last 20 years. Every major oil company is coming in with us. It's amazing. It's a beautiful thing to see. The leadership of the country has been very good. They've been very, very smart. The price of gasoline is now below $2.50 a gallon in many states, $2.30 a gallon in most states. And we'll soon be averaging less than $2 a gallon. In many places, it's already down even lower, $1.95 a gallon. Numerous states are at $1.99, numbers that nobody has heard for years. Actually, since my last administration, we got it down to around those numbers. I've signed an order directing and approval of many new nuclear reactors. We're going heavy into nuclear. I was not a big fan because I didn't like the risk, the danger, but they have the progress they've made with nuclear is unbelievable, and the safety progress they've made is incredible. We're very much into the world of nuclear energy, and we can have it now at good prices and very, very safe. And we're leading the world in AI by a lot. We're leading China by a lot. I think President Xi respects what we've done, in part because I've allowed these big companies building these massive buildings to build their own electric capacity. They're building their own power plants, which when added up is more than any country anywhere in the world is doing. I read recently an article in the Wall Street Journal that China's creating so much energy, and they are. I got to hand it to them. But we're creating as much or more, and we're letting them do that. I'm very proud of it. It was my idea. I said, you can't create this much energy. We needed more than double the energy currently in the country just to take care of the AI plants. And I said, we can't do that. We have an old grid system. And I came up with the idea, you people are brilliant. You have a lot of money. Let's see what you can do. You can build your own electric generating plants. And they looked at me. They didn't believe me. All of the names that are, I think, in the room right now, if you want to know the truth, they didn't believe it. And I said, no, you can't. They came back 2 weeks and they didn't have the plant. They said, we thought you were kidding. I said, no, not only am I not kidding, you're going to have your approvals within 2 weeks. I always say nuclear will take 3 weeks. But most aren't going that. They're going oil and gas. They're even going coal in some cases. Because of my landslide election victory, the United States avoided the catastrophic energy collapse which befell every European nation that pursued the Green New Scam, perhaps the greatest hoax in history. The Green New Scam, windmills all over the place, destroy your land, destroy your land. Every time that goes around, you lose $1,000. You're supposed to make money with energy, not lose money. Here in Europe, we've seen the fate that the radical left tried to impose on America. They tried very hard. Germany now generates 22% less electricity than it did in 2017. And it's not the current chancellor's fault. He's solving the problem. He's going to do a great job. But what they did before he got there, I guess that's why he got there. And electricity prices are 64% higher. The United Kingdom produces just 1/3 of the total energy from all sources that it did in 1999. Think of that, 1/3. And they're sitting on top of the North Sea, one of the greatest reserves anywhere in the world, but they don't use it. And that's one reason why their energy has reached catastrophically low levels with equally high prices. High prices, very low levels.